Hello everyone, I am Hani Thakkar. Welcome back to my channel JJ Education. Before few days मैंने Instagram पे एक story upload की थी What should be next video from my channel. So maximum viewers के opinion को ध्यान में रखते हुए मैंने एक motivational video create किया है and the name of the topic is How to stay motivated towards study. See, it has been 2.5 months passed away of this lockdown period that we all Indian people are facing because of this critical situation of COVID-19. उसकी वजह से लोगों की जो रूटीन लाइफ है वो पूरी तरीके से स्टॉप हो चुकी थी एंड ये जो लॉकडाउन की इफेक्ट है वो स्टूडेंट्स के एजुकेशन पर डीपली अफेक्ट कर रही है। हालांकि अब गवर्नमेंट ने रूटीन वर्क को स्टार्ट करने की काफ़ी हद तक परमिशन दे दी है, लेकिन फिर भी ये जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस है उनको रेगुलरली ओपन होने में अभी भी काफ़ी सारा टाइम निकल जाएगा and that's why they have started providing online lectures for the student. But most of the students are habitual with the classroom learning and that's why they are not comfortable with this technology and it will affect deeply in their education. Okay, so for that purpose I am here to give you some of the tips which will surely boost your power towards study. Okay, so now let's begin. See, the one thing that we all need to keep in our mind is there is no any single strategy which help everyone in supporting ongoing motivation. However, there are plenty of options are available which you can follow. एंड अगर उसमें से ऐसी कोई स्ट्रेटेजी है जो आपको अपना मोटिवेशन पावर बिल्ड करने में हेल्प कर रही है देन जस्ट फॉलो इट, क्योंकि इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि योर मोटिवेशन स्ट्रेटेजी शुड मोटिवेट यू। ऐसा जरूरी नहीं है कि इट शुड बी अग्रीड बाय अदर पीपल ऑल्सो। ठीक है, सो हियर आर सम ऑफ द टॉप टिप्स फॉर स्टेइंग मोटिवेटेड टूवर्ड्स स्टडी। इन दैट द फर्स्ट वन इज यूज टाइम मैनेजमेंट टेक्निक। सी, आपको क्या करना है, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट योर टाइम वेस्टर्स, सोशल मीडिया, मोबाइल, टेक्सिंग और ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसकी वजह से आप अपना असाइनमेंट एंड आप अपनी स्टडी ऑन टाइम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। सो व्हेन यू सर्च आउट दोज थिंग्स यू विल बी रियलाइज्ड दैट यू शुड नॉट वेस्ट योर टू मच टाइम ऑन सच एक्टिविटी। ओके, देन द सेकेंड थिंग अंडर दिस टॉपिक इज फोकस ऑन स्टडी एंड डू वन थिंग एट वन प्रॉपर टाइम, क्योंकि मल्टीटास्किंग वर्क विल मेक यू स्लो डाउन. For example, if you are reading books and parallelly you are thinking about your project, then you will not able to pay 100% on both this work. Okay, so stop doing that and just do one thing at one proper time. Then the third thing is try to make to-do list. It means when you wake up in the morning, just make a list of all your works that you have to complete within a day. See, if you make yourself habitual with this activity, it will surely boost your power towards study. Okay, or else you can also make structured schedule like how much time you have to spend on study, how much time you have to spend some other extra work, for example watching TV or else watching movies, series, etc. क्योंकि research has shown that students who have a structured schedule are more successful academically. ठीक है, second tip is try to create a healthy study environment. Like if you are doing your work on laptop, then just make sure that you have a proper internet connectivity. क्योंकि अगर आप अपना प्रोजेक्ट लैपटॉप पर कर रहे हो एंड उस टाइम पे इंटरनेट की जो एक्सेसिबिलिटी है वो स्लो डाउन हो गई, देन इट विल मेक यू बोर. ठीक है, and yes, try to select quiet and peace place for your study. For example, अगर आप घर पे स्टडी कर रहे हो then just make a distance from television from your family members so that the disturbance has not been created. And if you are living in hostel or PG, then just stay away from your roommates, okay, at the time of study. Now the last and very most important tip is focus on your long-term goal. See, you should know what you are doing and why you are doing. For example, अगर आप MBA कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपने MBA ही एज अ डिग्री क्यों सिलेक्ट किया
and what will be the benefits after being an MBA. ठीक है? In short, what am I saying you is, if you are 100% clear about your career, about your goal, about your dream, then no one can stop you to achieve it. Okay? So just be calm, forget about the time that you have wasted in this lockdown period. Try your study as soon as possible. Give your best for achieving your dream. Okay? So here I am done with my today's speech. Hope my wordings will help you to stay motivated towards your study. Thank you so much for watching. And yes, अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, then please subscribe it and also press bell icon so that you can see all videos related to this first. See you in my next video. Till goodbye. Keep learning, keep educating yourself. Thank you.